And today, you could only confront when it was absolutely inevitable. So you waited for inevitability of it. आपने आके मुझे बोला, आशीष, मुझे आपसे कंप्लेन है. आशीष इज लाइक कि अच्छा, तो तू कह रहा है कि मैं खराब आदमी हूं. अभी तो कुछ टाइम पहले I had to let go of someone. I'm not talking about this anymore. Because जब ये 4 चीजें मैंने डिसाइड कर लिया है कि I'm ready to take on my shoulders, then I can also take the decision single-handedly. Confrontation is, I don't want to call it a skill, but over the years in life, I almost feel like that it's a skill. I still believe that it shouldn't be. हमें बचपन से सिखा दिया गया है कि be nice to people, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी को कुछ ऐसा मत बोलो जो उसको बुरा लग जाए, ओहो कहीं वो बुरा मान गया तो कुछ गलत ना कर दे. And we have systematically made ourselves non-confrontational. And उस वजह से हमारे साथ एक और प्रॉब्लम हो गई है कि हम सही समय पे कन्फ्रंट नहीं करते, पर हम बिल्कुल अति हो जाने के बाद, when we are absolutely at our wits end, that's exactly when we go in with all weapons and we are like, आज या तो तू नहीं या मैं नहीं. एंड फिर हम कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट था ना, देखो फट गया. पर एक्चुअली वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं फटा. प्रॉब्लम ये है कि आपने टाइम से कन्फ्रंट नहीं किया क्योंकि इट वाज डिफिकल्ट देन. एंड टुडे यू कुड ओनली कन्फ्रंट व्हेन इट वाज एब्सोल्युटली इनएविटेबल. सो यू वेटेड फॉर इनएविटेबिलिटी ऑफ इट. एंड दैट मीन्स बाय डिजाइन यू आर ऑलरेडी एट the absolute end of that game. Result is going to be binary. There is not going to be any gray in that. या तो लगेगा या नहीं लगेगा. तो या तो आप दब के आएंगे या सामने वाला आपको दबा देगा, या तो आप दबा देंगे. Difficult conversations are actually difficult because of 2 reasons. One, as I said, confrontation. Fear of confrontation. On the other side also, it is playing the same way. जिस तरीके से आपको कन्फ्रंट करने से डर लग रहा है, ऐसे ही सामने वाला कन्फ्रंट नहीं होना चाहता क्योंकि इट मेक्स देम लुक बैड. एंड आपने आके मुझे बोला, आशीष, मुझे आपसे कंप्लेन है. आशीष इज लाइक कि अच्छा, तो तू कह रहा है कि मैं खराब आदमी हूं. दीज आर नॉर्मल रिफ्लेक्सेस. एक तो आपको बहुत मेहनत लगी ये बोलने में कि आशीष मुझे आपसे कंप्लेन है, और दूसरी मुझे बहुत मेहनत लग रही है ये सहने में कि आपने मुझसे कंप्लेन कर दी. कौन हो आप? बट इन कॉन्वर्सेशंस को डिफिकल्ट होने की जरूरत नहीं है अगर ये टाइमली की जाए. ये कंप्लेन कब बनी? जब आपको पहली बार बुरा फील हुआ, तब आप रिस्पॉन्सिबली ये बात जाके कर सकते थे. इजियर सेड देन डन, आई नो. टाइमली अगर हम किसी से बात करते हैं, अगर हम छोटे में रिजॉल्व कर लेते हैं, तो हमें बाद में नुकसान नहीं होता. वी हैव दीज ओल्ड, एज ओल्ड एडेजेस, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. दैट इज ट्रू. छोटे में कन्फ्रंट कर. बट हैविंग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस आर also called difficult because when we confront someone, we forget to make space for 2 things. One, space to know that we were wrong. अगर आपको किसी से तकलीफ है या आपको किसी के साथ खेलने में मजा नहीं आ रहा, तो हो सकता है ना उसको भी नहीं आ रहा, और आपको ये स्पेस तो छोड़ना ही पड़ेगा उस कॉन्वर्सेशन में कि वो अपनी बात आपको बता सके. दूसरा, अलाउइंग योरसेल्फ टू बी इन देयर शूज. आपने उनके पर्सपेक्टिव से सोचा ही नहीं, और दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोच पाना एक्चुअली डिफिकल्ट काम है. ऐसे आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारा अपना पर्सपेक्टिव इतना स्ट्रांग होता है, हमारा अपना वर्ल्ड व्यू इतना स्ट्रांग होता है कि जब हम प्रिटेंड करते हैं कि हम सामने वाले के पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं, तब भी हम अपने ही पर्सपेक्टिव में सोच रहे होते हैं सामने वाले के पर्सपेक्टिव से.
बिकॉज मुश्किल है। तो हमारे पास वो लेंस नहीं होता कि यार इसको एक्चुअली कैसा फील हो रहा होगा, क्योंकि वो है तो प्रीटेंस ही। मतलब रियलिटी में तो आप उसके शूज में फील कर ही नहीं सकते, आप बस कोशिश कर सकते हो कुछ डिग्री क्लोज पहुंचने के, सो द ओनली वे टू डील विद इट इज लीव सम स्पेस। बिकॉज असलियत में सबसे बढ़िया तरीका ये जानने का कि वो क्या सोच रहे हैं, वो ये है कि आप उनसे पूछ लो ना यार, वो बता देगा। तेरे को इतना दिमाग खर्चने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट मेक सम स्पेस, अलाउ देम टू टेल यू। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन difficult conversations, these conversations become even more difficult when we don't want to lose, and that's actually the biggest problem. किसी भी difficult conversation को करने में सबसे बड़ा डर क्या है? आप हार के नहीं आना चाहते उसमें से, तो you become protective and possessive of it, and because you become protective and possessive, so you're like ये इस बारे में मत छेड़ यार, नहीं करेंगे बात। But fact is that it is bothering you. You're anyway losing. Might as well call the elephant in the room, right? So, अगर आप अपने साइड पे इतना स्पेस बना लो that I am ready to lose and take the burn, then you're good. अभी तो कुछ टाइम पहले I had to let go of someone. And when I tried to tell them, when I tried to, confront them with their lack of output, lack of input, lack of authenticity and integrity shown in the system, they lashed back at me. It was a difficult conversation because while I was trying to, make space for them to, speak, I was also trying to not listen to them because there was hard evidence that they did not deliver what they were supposed to. Now, in that conversation, there came a point where I had to choose. And the choice was that I take the burn, means I take the responsibility of hiring them, and I take the responsibility of they not delivering, and I take the responsibility to also letting them go, and I also take the responsibility of paying them the money which we promised to pay them, but they don't deliver. They don't deliver on. And as soon as I took that decision, I basically also said, all right, I'm not talking about this anymore. Because जब ये 4 चीजें मैंने डिसाइड कर लिया है कि I'm ready to take on my shoulders, then I can also take the decision single-handedly. And that person asked me, but you didn't even listen to me. I said, I can listen to you if you are ready to share the burden. If you're ready to listen to me and I listen to you, and then we share the burden of this money, we share the burden of this lack of output together. If you're ready for that, I'm happy. Let's chat. And we can chat for 3 days. I don't mind that. I'll listen to you all day. But if I am the one who's going to take the entire burden, that I am the one who's responsible, then I'm the one who's going to decide. And that decision, you can challenge on the hard fact that whether the delivery happened or not. They said, no, delivery though didn't happen. So I said, well, in that case, this difficult conversation is easy. This is done. So, difficult conversations are difficult because we don't want to confront, because we don't want to give other person space to put their perspective on table, and also we don't want to lose. But if we are ready to lose, it allows us to allow them to put their perspective, and confrontation becomes responsible and easy. It may not result in exactly how you want it to be, but it will be worth it.